Recording stop. Bismillahirrahmanirrahim. Today I am going to explain a new topic, that is a fibroid uterus. As you people can see in this picture, there are masses of varying sizes, a number of masses. All these are fibroids removed from a patient after a surgery. What is a fibroid uterus? It's a benign tumor arising from the smooth muscles of the uterus, also known as leumyoma. Leumyoma is a better term used for the fibroids, and it's a benign tumor. It arises from the smooth muscles of the uterus. On cross section, if you see the fibroids, it will be an oval or rounded in shape. It would be firm in consistency, and if we cut a fibroid in half, that would show white whorled appearance. The white whorled appearance of the smooth muscles inside the fibroid is typical of the fibroid uterus. And on a microscopic picture, there would be bundles of smooth muscle cells in the fibroids. So the uterus consists of smooth muscles and connective tissue. The fibroids arises from the smooth muscles of the uterus. Regarding the epidemiology, it is present in 20 to 30% women of reproductive age. It is fibroid is typical of reproductive age. It never occurs before menarche and it regresses after menopause. So बिफोर मेनार्की हमें उन बच्चियों में फाइब्रॉइड्स कभी नहीं मिलेंगे, और आफ्टर मेनोपॉज ये जो फाइब्रॉइड्स हैं, चाहे जितने भी साइज के हों, जितने भी उनके नंबर हों, दे स्लोली रिग्रेसेस आफ्टर मेनोपॉज. इसीलिए फाइब्रॉइड को कहते हैं कि इट्स अ डिजीज ऑफ अ रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप. Parity, it occurs commonly in infertile and women of low parity. वो जो completely subfertile हो, चाहे वो primary infertility हो या secondary हो या वो low parity के हो, means she has one or two children, तो उनमें fibroids की development ज़्यादा common है. Regarding the race, it is 9 folds higher in black women, and it is more common in patients having a family history of fibroid. तो family history भी fibroid में एक important role play करती है. जिनकी mothers में fibroids हों, उन बच्चियों में fibroid develop होने का risk ज़्यादा है. Regarding etiology, it is estrogen development. Estrogen development का मतलब ये है कि चूंकि ये reproductive age group में ज़्यादा होती है, before menarche जो anterior pituitary और ovarian cycle है वो इतना develop नहीं होता, और after menopause चूंकि ovarian estrogen production stop हो जाती है, तो उनमें ये regress कर जाता है. तो फाइब्रॉइड्स जो है वो ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट है, इसलिए ये रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में ज़्यादा कॉमन है. Now the types of fibroid uterus. Fibroids may arise from the uterine cavity, it may arise from the cervix, or it could be intraligamentary. तो तीन बेसिक टाइप्स हैं फाइब्रॉइड्स के, यूट्राइन, सर्वाइकल एंड इंट्रालिगामेंट्री. अमंग द यूट्राइन फिर आगे उसकी फर्दर सब टाइप्स हैं, सबसिरोजल, इंट्राम्यूरल एंड सबम्यूकस. जो सबसिरोजल फाइब्रॉइड्स होते हैं, दे आर लाइंड बाय द पेरिटोनियल कवरिंग ऑफ द यूट्रस. अगर उसकी पेरिटोनियल लाइनिंग है तो इट मीन्स के दैट फाइब्रॉइड इज अ सबसेरोजल फाइब्रॉइड. जबकि इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड इज सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय द नॉर्मल स्मूथ मसल्स ऑफ द मायोमेट्रियम, तो उसे हम कहेंगे कि ये ट्रू इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड है. जबकि सब म्यूकस फाइब्रॉइड जो होते हैं, दे आर लाइंड बाय द एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ द यूट्रस. तो अगर हिस्टोपैथोलॉजी पे फाइब्रॉइड्स की लाइनिंग में एंडोमेट्रियल लाइनिंग है, तो इट मीन्स दैट इट इज अ सब म्यूकस फाइब्रॉइड. यही सब सिरोजल इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड्स आर आल्सो सीन इन द सर्विक्स, तो उन्हें हम कहते हैं कि ये सर्वाइकल फाइब्रॉइड्स हैं. इंट्रालिगामेंट्री फाइब्रॉइड्स जो होते हैं, ट्रू इंट्रालिगामेंट्री फाइब्रॉइड्स, उनकी कोई डायरेक्ट कनेक्शन या अटैचमेंट नहीं होती टू द यूट्रस. दे आर इन द ब्रॉड लिगामेंट बट दे डोंट हैव अ ट्रू लिंक और अटैचमेंट टू द यूट्रस, तो उनको हम कहते हैं कि दे आर इंट्रालिगामेंट्री फाइब्रॉइड्स.
Now, this is a picture showing different types of fibroids. Picture of uterus, जो फंडल एरिया में आपको नजर आ रहे हैं, it is the intramural fibroid. जो the one which is towards the uterine cavity, it is called a submucous fibroid, and the one which is towards the outer surface of the uterus, it is the subserosal fibroid. Now, the clinical features of the fibroid. 20% of patients with the fibroid, they are completely asymptomatic, which means they do not have any symptom. They come to the hospital for some other reason and they are diagnosed incidentally or accidentally during abdominal examination or pelvic examination or ultrasound examination, which was done for some other reason to have the fibroids. तो उनको इंसिडेंटली पता चलता है कि उनके यूट्रस में फाइब्रॉइड्स हैं और वो टोटली एसिम्टोमेटिक होते हैं। जो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स हैं जिसके साथ पेशेंट प्रेजेंट करते हैं, दीज आर दी मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंसेस, प्रेशर सिम्टम्स, पेन एंड सबफर्टिलिटी। अमंग द मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंसेस जो मोस्ट कॉमन है, दैट इज रेगुलर हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग उनकी हैवी होती है लेकिन वो रेगुलर और साइक्लिकल होती है, दैट इज regular heavy menstrual bleeding. Sometimes the patient may present with the intermenstrual or postcoital bleeding. जो regular heavy menstrual bleeding है, that is more common in the submucous fibroid, they are, which protrude towards the uterine cavity, जिनके ऊपर endometrial lining होती है। और वो bleeding heavy क्यों करते हैं? Because of increased surface area of the endometrial lining. जो सबसिरोजल फाइब्रॉइड्स होते हैं, दे डू नॉट कॉज मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंसेस। जो इंटरमेंस्ट्रुअल और पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग है, वो ज़्यादातर उन पेशेंट्स में कॉमन होती है जिसमें सबम्यूकल फाइब्रॉइड्स दे आर पेडेंक्युलेटेड और दे आर पॉलिपॉइडल शेप, जो फाइब्रॉइड पॉलिप की शक्ल में होते हैं। तो उनमें फिर इंटरमेंस्ट्रुअल और पोस्ट कॉइटल डिस्टर्बेंसेस ज़्यादा कॉमन होते हैं। प्रेशर सिम्टम्स उन पेशेंट्स में होते हैं विच हैव वेरी लार्ज फाइब्रॉइड्स, तो उनके साइज की वजह से दे फील डल pelvic pain or sometimes large cervical fibroids. They puts pressure on the bladder and the patient presents with increased frequency or sometimes urinary retention. तो जो large fibroids होते हैं, they cause pressure symptoms. जो फाइब्रॉइड्स होते हैं, दे डू नॉट यूजुअली कॉज पेन, वो पेनलेस होते हैं, वो पेन नहीं करते। पेन तभी होता है व्हेन दे बिकम कॉम्प्लिकेटेड, और कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं? इफ दे रैपिडली ग्रो इन साइज, तो नेक्रोसिस की वजह से पेन हो, या दे समटाइम्स दे बिकम इन्फेक्टेड, तो फिर इन्फेक्शन की वजह से पेन होता है, और या फिर उनमें हेमरेजेस हो जाए तो उस वजह से पेन होता है, या डिजनरेशन हो जाए तो दे स्टार्ट्स कॉजिंग पेन। अदरवाइज फाइब्रॉइड्स डू नॉट कॉज पेन। सबफर्टिलिटी, सबफर्टिलिटी भी फाइब्रॉइड्स में सिर्फ उन पेशेंट्स में होती है इफ द फाइब्रॉइड इज लोकेटेड एट द कॉर्नोल एंड, तो जिससे स्पर्म की असेंड जो होता है वो डिफिकल्ट हो जाता है, या वो सब म्यूकस फाइब्रॉइड्स और डिस्टॉर्ट कर रही है यूट्राइन कैविटी, तो उसमें इम्प्लांटेशन प्रॉब्लम्स की वजह से वो सब फर्टिलिटी कॉज कर सकते हैं। सब सिरोजल फाइब्रॉइड्स दे डू नॉट कॉज सब फर्टिलिटी, उनका सब फर्टिलिटी के साथ रिलेशन नहीं होता। Complications are torsion, infection, degenerations, hemorrhages, abnormal lie, and postpartum hemorrhage. टॉर्जन फाइब्रॉइड यूट्रस में उनमें कॉमन होता है जिसमें सब सिरोजल पेडिकुलेटेड या लार्ज पेडिकल के साथ दे आर अटैच्ड टू द यूट्रस, तो समटाइम्स दे ट्विस्ट हो जाते हैं, तो ड्यू टू टॉर्जन द पेशेंट प्रेजेंट्स विद एक्यूट एब्डोमेन, वो इस्कीमिक नेक्रोसिस की वजह से वो सिवियर पेन में होते हैं, एगनी में होते हैं, तो टॉर्जन इज वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन ऑफ पेडिकुलेटेड सब सिरोजल फाइब्रॉइड्स। इन्फेक्शन इज़ अनदर कॉम्प्लिकेशन ऑफ फाइब्रॉइड। अगर वो इन्फेक्ट हो जाए, अल्सरेट हो जाए, जैसे फाइब्रॉइड पॉलिप्स प्रोट्रूडिंग थ्रू द सर्विक्स इनटू द वजाइना, तो अगर वो असेंडिंग इन्फेक्शन हो जाए तो देन दे बिकम कॉम्प्लिकेटेड। जो degenerations हैं which are common in the fibroids are hairline degeneration, fatty degeneration, red degeneration, calcification and
sarcomatous degeneration. Hairline degeneration is more common in reproductive age group, जबकि fatty degeneration it is more common in the postmenopausal women. और रेड डिजेनरेशन जो है इट इज़ मोर कॉमन इन दी प्रेगनेंसी. अगर फाइब्रॉइड भी हो और प्रेगनेंसी भी हो तो जैसे जैसे प्रेगनेंसी ग्रो करती है तो फाइब्रॉइड्स आल्सो इंक्रीज इन साइज और रैपिडली इंक्रीज करने की वजह से जो स्मूथ मसल्स होते हैं दे बिकम डिप्राइव्ड ऑफ द ब्लड सप्लाई, क्योंकि फाइब्रॉइड की एक न्यूट्रेंट आर्टरी होती है विच सप्लाइज दी फाइब्रॉइड. तो वो रैपिड ग्रोथ की वजह से जो सेंट्रल सेल्स होते हैं दे बिकम नेक्रोज्ड एंड दे कॉज रेड डिजेनरेशन एंड पेशेंट प्रेजेंट्स with pain during pregnancy. This is called red degeneration. Calcification is also common in the postmenopausal woman जिसमें fibroids के अंदर calcified tissues deposit कर जाता है and they are visible on radiographs जिसमें वो opaque shadows नजर आते हैं inside the uterus. This is called calcification. Sarcomatous degeneration is also common in the postmenopausal woman जिसमें जो malignant cells होते हैं they become benign cells they become malignant, although it is very rare 0.1%, but whenever in postmenopausal women if the fibroid rapidly increases in size so we should always suspect sarcomatous degeneration. Hemorrhage is another complication which can occur in the fibroid, और hemorrhage inside the fibroid भी हो सकती है और hemorrhage intraperitoneal भी हो सकती है. If the patient is having a pregnancy and fibroid uterus, then sometimes the patient may present with abnormal lie of the fetus, especially in cases where the fibroid is inside the cervix. तो cervix में होने की वजह से बेबी की जो lie है it becomes abnormal. और same patients जो प्रेगनेंसी और फाइब्रॉइड्स के साथ होते हैं तो आफ्टर डिलीवरी दे आर एट रिस्क ऑफ postpartum hemorrhage, again due to the large surface area due to fibroids. Investigations, the mainstay of investigation is the ultrasound examination, but sometimes the fibroids can also be diagnosed on clinical examination. जैसे per abdomen examination पे अगर आपको कोई nodular firm mass feel होता है which seems to be arising from the uterus तो we suspect the fibroid uterus. Similarly pelvic examination पे भी अगर single fibroid होगा तो the uterus would be uniformly enlarged in size, firm in consistency, और अगर multiple fibroids होंगे तो on pelvic examination multiple nodules would be felt which would be firm in consistency and seems to be arising from the uterus. तो फिर उनमें we send these patients for ultrasound examination and the final diagnosis is made on ultrasound. In difficult cases where it is difficult to diagnose whether this mass is a fibroid or an ovarian cyst, तो we may go for MRI और laparoscopy. तो उस पे भी हम उसकी डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये जो mass है ये fibroid है या ये ovarian mass है. Another investigation which is a baseline investigation is a complete blood count, because most of the patients with fibroid present with heavy menstrual bleeding which ultimately leads to anemia. So to diagnose or detect anemia and timely to correct it, so we do CBC. Now these are the two pictures. ये transvaginal ultrasound scans हैं showing fibroids inside the uterus. इसमें जो लेफ्ट साइड जो राइट साइड पे पिक्चर है उसमें the fibroid is enlarged and it is the submucous fibroid which is protruding into the uterine cavity. This is another picture showing multiple fibroids. इसमें अगर आप देखें तो फंडल एरिया पे भी हैं, पोस्टीरियर वॉल में भी हैं, सर्विक्स में भी हैं और ब्रॉड लिगामेंट में भी हैं. तो ये मल्टीपल फाइब्रॉइड यूट्रस की एक पिक्चर है. ट्रीटमेंट, इफ द पेशेंट इज कंप्लीटली एसिम्प्टोमेटिक, साइज भी उसका छोटा है, कोई सिम्टम्स भी नहीं क्रिएट कर रहा, तो we do conservative management. We do nothing but counsel the patient and send them home. We do not touch those patients if they are completely asymptomatic.
मेडिकल ट्रीटमेंट सिर्फ उन पेशेंट्स को एडवाइस की जाती है जिनमें मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंसेस हों, like heavy regular menstrual bleeding. The medicines which are used are tranexamic acid, mefenamic acid, and combined oral contraceptive pills. What they do is they reduce the um, menstrual flow by 50%. Means वो जो menstrual blood flow होता है उसकी reduction में ये help करते हैं. GnRH agonist, gonadotropin releasing hormone agonists. They are very good medication for pre-surgery patients. ये सिर्फ उन patients में दी जाती है जिनको हम सर्जरी के लिए तैयार कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल इफ size of the fibroid is very large, it is difficult to remove during surgery, और उसके लिए अगर हमें मिड लाइन इंसिजन देना पड़े, और हाँ अगर हम सस्पेक्ट करें कि इसको शायद अम्बलाइकस से भी ऊपर तक एक्सटेंड करना पड़े, तो फिर हम बिफोर सर्जरी वे गिव देम GnRH agonist to shrink their size. उनका साइज श्रिंक करने के लिए, सो दैट दे कैन इजीली बी रिमूव्ड through the fan and steel incision rather than giving midline incision. और sometimes अगर वो abdominal surgery उसको required हो तो we give them GnRH agonist to reduce their size. तो फिर हम उसको so that that fibroid can be reduced vaginally as compared to the abdominal procedure. The different surgeries which are advised for symptomatic fibroid uterus. So the type of surgery depends on the presenting complaints of the patients, choice of the patients, and choice of fertility. तो different treatment options हैं, जैसे hysteroscopic removal of fibroids है, myomectomy है, hysterectomy है, and uterine artery embolization. If the fibroid is small in size and it is protruding to the cervix, let's just say polyp hai, so it can be removed hysteroscopy. If the fibroid is intramural, large in size, and the patient has not completed her family yet, so then we can go for myomectomy. Myomectomy means we remove only the fibroids and remove the uterus as such for future fertility. So that is called myomectomy. So myomectomy can be done as laparoscopically, it can be done as open surgery, or it can be done as hysteroscopically, depending on the location and size of the uterus. Hysterectomy हम उन पेशेंट में एडवाइस करते हैं who have symptomatic fibroids, large fibroids, and who have completed their family. मतलब उनमें family issue कोई नहीं है, fertility issue कोई नहीं है, तो these patients can opt for the hysterectomy. A newer technique is called uterine artery embolization. Uterine artery embolization is a newer technique. It is performed by the interventional radiologist. It involves embolization of both uterine arteries under radiological guidance with a small incision in the femoral artery under local anesthesia. इसमें पेशेंट को लोकल एनेस्थीसिया देते हैं, फिर फेमरल आर्टरी में एक स्मॉल इंसिजन देते हैं, और फिर उसमें कैन्युलेशन करते हैं टिल दी यूट्राइन आर्टरीज, और फिर बोथ यूट्राइन आर्टरीज को एम्बलाइज कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, जिससे फाइब्रॉइड्स की जो ब्लड सप्लाई है वो ब्लॉक हो जाती है, दे श्रिंक इन साइज. It causes 50% reduction in the fibroid size and 50% reduction in the menstrual blood loss. But as we all know, these procedures are not risk-free. Complications इसके साथ हो सकती हैं. फीवर हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, फाइब्रॉइड एक्सपल्शन हो सकता है, और पोटेंशियल ओवेरियन फेलियर भी हो सकता है. So before going for this procedure, all the benefits and risks are discussed with the patients, and then the patient comes to a final decision. It's a fertility preserving procedure. चूंकि इसमें सिर्फ यूट्राइन आर्टरीज को एम्पलाइज किया जाता है, इसमें यूट्रस को रिमूव नहीं करते, सो इट्स अ फर्टिलिटी प्रिजर्विंग प्रोसीजर. वो पेशेंट्स जो अपनी फर्टिलिटी को प्रिजर्व करना चाहती हैं, दे कैन ऑप्ट फॉर दिस प्रोसीजर. थैंक यू.